Hi all, welcome back again. Okay, so yes, firstly we'll see the topics which we have covered yesterday, right? So in the yesterday's lecture, we have covered the different techniques which we are going to use for testing purpose, right? So for generating a test data, we are going to use different techniques. Out of these, first one is the ECP, which stands for equivalence class partitioning. Okay, sorry. Okay, in case of ECP, what we are doing, we are equally dividing a particular set of inputs or range of inputs, and within the range of inputs, whatever the data combinations we are making that are positive or valid data, and out of the given range or out of the given requirement is nothing but your invalid data for testing purpose. Okay. This one is your ECP, that is the equivalence class partitioning. Surrounding to this, we have covered few examples, right? Second one technique for the data generation is the BVA, that is the boundary value analysis. Okay, and within this technique, we are making a use of this six combination: mean, mean plus one, mean minus one, max, max plus one, and max minus one. Okay, and based on this, basically we are deriving the test data for testing purpose. Okay, so basically BVA and your ECP in a combination is used is in combination is used for your input domain testing. Okay, and during input domain, what we are testing, basically we are testing the input box, where like on the application side, where we are entering the text, then your email ID, mobile number, username, password, different fields, basically we are entering up, right, depending upon requirement. Okay, for checking such input text boxes, basically we are implementing two techniques. One is your ECP and another one is BBA, right? So these are the two important points from the input domain testing perspective. Third one type we have covered, that is the decision table technique. So basically when we are going to implement this technique, where if we have multiple conditions, and based on this condition we have certain actions as well, right? So in that situation we are going to make one table in a Excel format, where we'll be kind of putting up the different conditions and different actions across it, right? And we are deriving the test data. This one is the third technique. Fourth technique we have covered, that is the state transition technique. During this technique, basically what we have implemented, different states we have covered, right? If the state is passed, then it redirect to the common home page, and if that one is fail, then it redirects to the next step. Likewise, we have covered the few examples: banking example, ATM example, your login your example, right, surrounding to your state transition technique. And the last fifth one is the error guessing. It totally depends upon the tester knowledge, and based on our knowledge, what we are doing, we are finding the basically we are searching for the defects in the application, right, based on our prior knowledge. And while searching or while performing, these techniques only will be implementing. Okay, either it could be decision sorry, it could be your input domain, which includes ECP, BA. It could be your decision, it could be your state transition, one of the data generation technique you are using during your error guessing as well. Yes, so yeah, we covered this few important techniques surrounding to the test technique, right? Okay, now today we'll be focusing more on the documentation part, like within your within your project, what all documentation will be involved, right? So on that part we'll see into the detail. So like in the few lectures back, in the startup lectures only, we have studied about the SDLC. Basically it's a software, ESDLC, that is the software development life cycle. And within that SDLC there are six phases, right? Like your requirement collection, right, then analysis, then your design phase, then your coding phase, then testing phase. So
and later on your deployment phase and then maintenance phase. So out of these, testing is one of the important phase where as a tester we are working, right, जहाँ पे हम हमारा मेन रोल है. तो उसी टेस्टिंग फेज में और एक एडिशनल मॉड्यूल है ड्यूरिंग दैट टेस्टिंग फेज. ओके, तो आप वो पर्टिकुलर मॉड्यूल हम फॉलो करते हैं फॉर टेस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन, एंड SDLC मॉड्यूल हम फॉलो करते हैं फॉर entire development of our software application. Hence, STLC stands for software testing life cycle. It is surrounding to your only testing phase during within your SDLC. Okay, yeah, that is the main difference, guys. SDLC is a complete end-to-end process for your software development, and during SDLC there is one phase called testing, right? And during this testing, this STLC comes in a picture. That is the software testing life cycle. Okay, so STLC is a part of your SDLC, or we can say STLC is a one phase from your SDLC, right? STLC is nothing but testing phase of your SDLC, right? So that comes under your SDLC only. Okay, fine. So within STLC, what are the different phases? Okay, here you'll see a complete journey or complete stages we have into the software testing life cycle. So during testing phase, as a tester, we are going through these different phases for performing testing on the web application or mobile application, any kind of application basically. Okay, so yeah, during testing, these are the different phases here as well. So first one is the requirement analysis. As a tester, we also doing the requirement analysis. Then we are performing test planning for our entire testing cycle. Okay, one moment please. Okay, so yeah, during your STLC, we are performing requirement analysis, then we are doing test planning. Once the test planning is done, then we'll be moving towards the test case design, means actual documentation for the testing. Okay, then we are setting up the environment. Then we are going to execute the test cases which we have created earlier in the design phase, and later on, once we done with all the execution of steps, then we are performing test cycle closure. Okay, so these are the 6 phases during your STLC. We'll see one by one in detail. Okay, so that you'll get more clarity on this front. Okay, chalo, let's cover up one by one. Okay, so basically, yeah, we'll be starting with test plan phase, because this phase includes all surrounding to your requirement analysis. Different types of data is involved into the test plan. Okay, any plan, it means how we are going to perform. Okay, testing plan means how we are going to perform testing. What is the scope of our testing, like who will be performing testing, which kind of testing do we need to perform, is it a manual, is it a automation based, is it a mix, which tool we are going to refer, all the details will be mentioned in your test plan. Okay, surrounding to your testing. So basically test plan phase, right? So what does it include, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? तो what to test, हमें टेस्ट क्या करना है from the test perspective. Okay, what to test. Okay, one moment, let me. Okay, so here we are checking, like sorry, here we are performing what to test, right? Then we are going to check how to test, like we know we need to test the application. Now we are going to see how to test, how we are going to test the application, and when to test, timelines. Okay, surrounding to this. Okay, so it includes what to test, हमें test क्या करना है, then how to test, हमें test कैसे करना है, and when to test, हमें testing कब करनी है, right? So all these parameters are listed in your test plan. Then next point is the input documentation. So basically for going towards this test plan, हमें test plan बनाने के लिए कौन कौन से documents की requirement है? तो यहाँ पे हमारे पास project plan होना चाहिए and functional requirement document होने चाहिए, right? जो earlier phases में आपके already created रहेंगे.
Okay, because STLC is one of the phase of your SDLC, right? जहाँ पे आपकी ऑलरेडी रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस हो गई है, देन आपका डिजाइनिंग हो गया है, देन आपका कोडिंग भी हो गया है, राइट? लेटर ऑन आपका जो नेक्स्ट फेज है दैट इज द टेस्टिंग फेज, एंड विद इन दैट टेस्टिंग फेज हम टेस्ट प्लानिंग कर रहे हैं, राइट? STLC के अंदर। ओके, सो वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट प्लान एज अ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए। सो इसमें कौन कौन सी डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व है? तो आइडेंटिफाई द रिसोर्सेस, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। ओके, सो पर्टिकुलर टेस्टिंग करने के लिए हमें रिसोर्सेस क्या क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर पार्ट पे क्या चाहिए, हार्डवेयर साइड पे क्या चाहिए। इट मींस हम जो भी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं इट्स ऑन दी पीसी और सर्वर साइड, राइट? सो उसी चीज के लिए उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, कौन कौन से कॉन्फ़िग के सर्वर चाहिए, राइट? सारे रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे कलेक्ट की जाती हैं। देन टेस्टिंग टीम फॉर्मेशन। सो टेस्टिंग करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ पर्सन चाहिए? कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें 2 इंजीनियर चाहिए, टेस्ट इंजीनियर 3 चाहिए, 4 चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट की कैपेसिटी, राइट? सो दे विल बी planning for the test information. Okay, लेटर ऑन ऑल्सो टेस्ट एस्टिमेशन, मतलब हमें ड्यूरेशन दिया होता है कि ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन वी नीड टू गो फॉर टेस्टिंग। जो भी टेस्ट प्लान है उसमें एक टेस्टिंग का एस्टिमेशन होता है कि हमें कौन कौन से डेट पे क्या क्या परफॉर्म करना है, राइट? हर एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या है, रिलीज कब है, ये सारी चीजें। प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट प्लान, पर्टिकुलर टेस्ट प्लान का प्रिपरेशन एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व होते हैं। देन रिव्यू ऑफ टेस्ट प्लान, ओके, इसी डॉक्यूमेंट का रिव्यू भी होता है। देन टेस्ट प्लान साइन ऑफ, ओके, देन लेटर ऑन इसका फाइनल वर्जन रिलीज होता है और उस पे साइन ऑफ होता है। सो दैट विल बी योर डॉक्यूमेंटेशन फॉर योर एंटायर टेस्टिंग फेज। ओके, ठीक है। सो इसमें कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, देखिए। सो आपके प्रोजेक्ट्स में से जो भी टीम लीड रहेगा या टेक लीड रहेगा, राइट, टेस्ट लीड, सो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? एंड आपका जो भी फ्रॉम मैनेजमेंट साइड मैनेजर है, राइट, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रूवल। सो इसमें हमारा मतलब आप अगर सीनियर पोजीशन पे नहीं हो तो इसमें आपका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। ये डॉक्यूमेंटेशन ऑन मैनेजमेंट साइड एंड टीम लीड और टेस्ट लीड साइड ही प्रिपेयर होते हैं, राइट? एंड आउटकम क्या रहेगा, मतलब एट द एंड ऑफ दिस फेज कंप्लीशन हमें आउटकम एज आउटकम क्या मिलेगा? टेस्ट प्लान created मिलेगा, right? So these are the different things we need to consider during test plan phase. तो आपको simple question हो सकता है, what is test plan phase, okay, and what are the different parameters it includes? तो हमें ये points simple points बताने, like test plan defines what to test, how to test and when to test. What are the required document for your test plan? Project documentation, functional requirement documentation. What all are the activities involved here? Identification of resources, hardware, software, then formation of team, then test estimation, preparation of plan, review of the same, and then sign off of the same. That means the final version. Okay, and who is the responsible to for the creation of test plan? So yeah, in general cases test lead or team lead is used to generate this plan, okay, and later on test manager is used to approve the plan. Okay, and what is the final outcome for this phase? It is the test plan. So in this way आपका test plan document create होता है, right? And this test plan document is important for your test case design. यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा रोल है। So over here you'll see responsibility किसकी है ज्यादा? 70% टेस्ट इंजीनियर की। सो इस फेज में हमें वर्क करना है बेसिकली। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। So here the main task of identifying test scenario and writing of the test cases, जो अभी हम अपकमिंग नेक्स्ट वीक के सेशन में पूरा यही होने वाला है। अभी हम डॉक्यूमेंट लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, राइट? सो टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट में आपके क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए? इट्स अ मेन टास्क ऑफ टेस्ट इंजीनियर, ओके, identifying the test scenario and writing test cases for the same. देन व्हाट ऑल आर द इनपुट्स, हमें क्या क्या इनपुट चाहिए पर्टिकुलर टेस्ट डिजाइन करने के लिए? ओके, सो हमारे पास प्रोजेक्ट प्लान हो सकता है, देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है, देन टेस्ट प्लान हो सकता है, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, यूज केसेस हो सकते हैं, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन कंपनीज, डॉक्यूमेंट कम ज्यादा हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि सभी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट रहेगी। ओके,
So these are the input, and based on this हम क्या क्या activity perform कर सकते हैं during this phase. See, preparation of test scenario. बेस्ड ऑन दैट प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियो क्या है, टेस्ट केसेस क्या है, ये सब टर्मिनोलॉजी हमें कवर होगी. अभी जस्ट ऑन अ हाई लेवल हम समझ रहे हैं. ओके, देन रिव्यू, जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका भी रिव्यू होता है, राइट. देन एक आरटीएम डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स. आपकी क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट आपने कितने नंबर ऑफ टेस्ट सिनेरियो एंड टेस्ट केसेस राइट अप किए, उसका मैचिंग होता है, उसका पेयरिंग होता है. ओके, तो वो भी हम कवर अप करेंगे. एंड जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होता है ना, तो उसका फाइनल वर्जन पे साइन ऑफ होता है. सो इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो टेस्ट लीड आपका फॉर द साइन ऑफ, फॉर द रिव्यू वगैरह रहेगा रिस्पॉन्सिबल. एंड टेस्ट इंजीनियर आपका क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, राइट. ओके, एंड आउटकम क्या रहेंगे पर्टिकुलर फेजेस के, आपके पास मेन दो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे. वन इज योर टेस्ट केस डॉक्यूमेंट एंड अनदर वन इज योर आरटीएम, दैट इज द रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी डॉक्यूमेंट. ओके, सो ये पर्पज है बेसिकली सेकेंड फेज का, टेस्टिंग डिजाइन फेज. यहाँ पे हम एज अ टेस्ट इंजीनियर एक्चुअल वर्क करेंगे फॉर द डॉक्यूमेंटेशन क्रिएशन. ओके, सो बेसिकली फर्स्ट थिंग आपका टेस्ट प्लान रेडी होगा. जैसे ही टेस्ट प्लान रेडी होता है, बेस्ड ऑन दैट एज वेल एज जो भी आपके अदर डॉक्यूमेंट्स है, बेस्ड ऑन दैट आप थोड़ा टेस्ट सिनेरियो देखेंगे. मतलब हमने जिससे बात की थी ना, कोई भी लॉगिन है तो वहां पे हम पॉजिटिव इनपुट के लिए पॉजिटिव सिनेरियो से बात करेंगे, निगेटिव मतलब इनवैलिड डेटा के लिए निगेटिव टेस्टिंग से सिनेरियो से बात करेंगे, राइट. टू काइंड ऑफ टेस्टिंग्स हमने कंसिडर किए थे, एक पॉजिटिव एंड अनदर वन इज निगेटिव. ओके, so during testing also, based on this we are going to create some test scenario, and based on that scenario we are deriving the test cases. हमें scope है इसका आगे. ओके, चलो, हमने अभी तक टेस्ट प्लान देख लिया, राइट. देन व्हाट इज टेस्ट डिजाइन, टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट में क्या क्या हो सकता है वो भी कवर अप कर लिया. सो नेक्स्ट फेज आता है, आपने जो भी टेस्ट केसेस बनाए हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, बेस्ड ऑन दैट आपको एग्जीक्यूशन करना होता है, राइट. सो थर्ड फेज इज योर एग्जीक्यूशन फेज. सो एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है एक्चुअल, यहाँ पे. ओके, एक्चुअली यहाँ पे है ना, आपकी जो भी टेस्ट केसेस है उसका एग्जीक्यूशन होता है. तो ये चीज, ये पर्टिकुलर फेज में आपको क्या क्या चाहिए देखिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस एंड बिल्ड फ्रॉम द डेवलपमेंट टीम. सो ये तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट तो चाहिए. अलॉन्ग विद दिस हमने बात की थी, देखो ड्यूरिंग टेस्टिंग फेज हमें डेवलपर से, डेवलपमेंट टीम से क्या चाहिए, बिल्ड नंबर, पर्टिकुलर एप्लीकेशन का यूआरएल चाहिए. अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसका एपीके फाइल चाहिए, आईओएस का है तो उसका आईओएस का पैकेज चाहिए, राइट. लाइकवाइज हमें डेवलपमेंट टीम से बिल्ड नंबर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए फॉर टेस्टिंग. यहाँ पे हम एक्टिविटी क्या क्या परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केसेस, जो भी टेस्ट केसेस हमने राइट किए फर्स्ट फेज में, राइट, सिमिलर टेस्ट केसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं. एंड हमारा मेन मेन पर्पज क्या है एज अ टेस्ट इंजीनियर, सो हमें डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं, राइट. सो प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट रिपोर्ट, जैसे ही हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका एक रिपोर्ट हम क्रिएट करते हैं. इट इज कॉल्ड एज टेस्ट रिपोर्ट और टेस्ट लॉग. ओके, सो इन सब चीजों में रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द टेस्टर, राइट, टेस्ट इंजीनियर. एंड जो भी आपका साइन ऑफ रहेगा, रिव्यू रहेगा, राइट. ऑन द रिव्यू साइड who will be responsible for reviewing of your test report, test lead or team lead, right. Likewise, this one is your test phase, sorry, test execution phase. And what is the outcome, ये outcome will be your test report. मतलब जब आपका पूरा ये complete phase cover up होगा, सारे number of test cases आपके execute हो गए, तो आपका result output क्या होना चाहिए, test report. So this one is the main important third one phase during your STLC. हम सिमिलर रिपीट करेंगे ड्यूरिंग नोट्स. ओके, थोड़ा वहां पे भी और डिस्कस करेंगे, अभी एक्चुअल पॉइंट्स कर रहे हैं, राइट. सो देखिए, जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, बेस्ड ऑन दैट एग्जीक्यूट किया, राइट, तो आपको कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स उसमें फाइंड होते हैं, राइट, डिफेक्ट्स मिलते हैं. सो पर्टिकुलर डिफेक्ट्स को हमें ट्रैक भी करना होता, रिपोर्ट भी करना होता है और ट्रैक भी करना होता है, राइट. सो इसीलिए नेक्स्ट फेज आता है आपका डिफेक्ट रिपोर्टिंग एंड ट्रैक. मतलब हमें तो डेविएशन मिल गया, राइट, लॉगिन करने, फॉर एग्जांपल लॉगिन फंक्शनलिटी है, हमने करेक्ट क्रेडेंशियल पुट अप किया है फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा है, राइट, दैट वन इज द डिफेक्ट. ओके, इन दैट सिनेरियो हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया था उसमें एक सिनेरियो था, उसके अक्रॉस टेस्ट केस थी, और पर्टिकुलर टेस्ट केस हमने एग्जीक्यूट करके देखा, तो हमें एक्चुअल
एक्चुअल रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमें लॉगिन नहीं हो रहा है, राइट, विथ वैलिड डेटा एज वेल। बट हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, जो अगर हमारे पास वैलिड डेटा है, यूजर नेम पासवर्ड, तो हमें लॉगिन होना चाहिए। सो देयर इज अ डेविएशन इन बिटवीन योर एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल बिहेवियर, राइट, हेंस इट इज कॉल्ड एज डिफेक्ट। एंड पर्टिकुलर डिफेक्ट हमें रिपोर्ट करना होता है, राइट। फॉर दैट रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ डिफेक्ट डन इन दिस फेज, इस फेज में पर्टिकुलर इसका ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग होता है। तो यहाँ पे हमें इनपुट क्या चाहिए, देखो यहाँ पे विल बी नीडिंग हियर टेस्ट केसेस, राइट, and test report, which are the outcomes of your previous phases, right? Based on this, what we are doing, we are preparing a defect report, like how many number of defect we have found in the previous phase, and we are going to report that defects to the developer. So these are the two main activities during your defect reporting. Okay, and yeah, once we have reported that defect, okay, जैसे हम defect report करते हैं and developer starts working upon that, right, जैसे ही developer उसमें fix करता है, तो again हमें next उस न्यू वर्जन ऑफ बिल्ड मिलता है, राइट, एंड अपॉन दैट हम वापस से टेस्टिंग करते हैं, उसी टेस्टिंग को हम बोलते हैं रीटेस्टिंग, राइट, हमने देखा था इन लास्ट सेशन। ओके, so yeah, during this phase, who will be responsible? Test lead for the approvals and test engineer for the defect reporting. Okay, fine. And what will be the outcome? Means इसमें end of the document कौन सा रहेगा created आपका defect report, जिसमें सारे कुछ defects listed होंगे, right? So yeah, this one is the fourth phase, defect reporting and tracking. Okay, and yes, once we done with the all test case execution, all the test case execution report is also ready, and if we have, for example, if we have found 10 number of bugs, and all the bugs we reported to the developer and development team fixed the bug, we again retested them, we again perform regression testing in order to check whether that bug is impacting other module or not. Once we done with our all testing ना, so we are coming to the test closure phase, जहाँ पे हम certify करते हैं कि जितने भी number of test cases हमने बनाए हैं वो execute भी किए हैं, right, and the software is working fine. Okay, so यहाँ पे basically inputs हमारे particular inputs क्या रहेंगे for this phase, test report and defect report, right, and based on this हम क्या क्या चीजें perform करते हैं, देखिए, analysis of test report, analyzing the bug report, एंड इवेल्युएटिंग द एग्जिट क्राइटेरिया। इसका भी स्कोप हमें आगे है कि हम हमें एक टेस्टिंग स्टॉप कब करना है, उसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, राइट। सो उसी चीज को हम चेक क्रॉस चेक करते हैं। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल हियर फॉर टेस्ट क्लोजर? Your test team lead will be responsible for the approval and all, and as a test engineer you'll be creating this document based on this, right? Okay, then what will be the outcome of this phase? Test summary report will be the outcome of this phase. Means once we done with all kind of testing, right, we have created the report as well as we have sent the bug report, and based on that the developer fixes up, we again retested, and if that bug is closed, at that time we are stopping our testing, right, and at the end we are getting one document that is called as test summary document. Fine. Okay, so these all are the different phases of your STLC. Okay, yeah, we'll see here with detailed explanation as well. Okay, give me 1 minute, guys. Voice clear, guys? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, thank you. Yeah. Okay, so the notepad is visible, correct? Yes, sir. Okay, okay, fine, sure. So yeah, let's discuss all the points so that there will be more clarity on this front. Okay, let me put the main points over here. Okay, fine. Okay, so yes, the first terminology we have seen, that is the STLC. Okay, STLC is a part of your SDLC, right? Okay, what I will do, first point,
STLC is a part of your SDLC. Okay, what are the different phases during SDLC? Yes, tell me guys, SDLC के phases कौन कौन से हैं? Hello. Requirement collection of analysis. Right, requirement collection and analysis, right? Okay, then second phase is your design, right? Once the design is done, then there will be a coding phase. Once the coding is done, then there will be a test testing phase. Once the test, Testing. yes, then there will be a deployment. Deployment. Yes, right, deployment, there will be a deployment. Yes, then next one guys, and last one is the maintenance Maintenance. phase. Perfect. Maintenance. Right. Okay. There will be a maintenance phase. Okay. Okay. There will be a maintenance phase. Okay. So this ESDLC process model is for, guys, keep on mute, someone background noise is there. Okay. Fine. This ESDLC is for complete, okay, complete software development. Okay. This one is for complete software development process. Okay, SDLC stands for your complete journey of software development, and it includes your all the phases. Okay, but your STLC is a part of your SDLC. So this STLC phase comes under your testing. Okay, यहाँ पे आपका basically phase आता है कौन सा? STLC is a one of the part of your STLC is one of the part of your SDLC, and during this phase we have, during this phase for STLC we have different phases. Okay, let me put that as well. Okay, as we just now have seen, right? Okay, so what all are they? Yeah, let me just rearrange. Okay, so here also first one is kind of your requirement analysis, okay, and test planning. Based on that we'll be doing a planning as well, right? You can combine this as well, because based on requirement only we'll be doing the planning. Okay, once the planning is done, then we are going for test case designing. Okay, once the test plan is done, then we are going for test case design. Okay, once the testing document is ready, then we are going for the environment setup. Okay, that part will cover what is the environment and all. Okay, don't worry about this. Okay, so yeah, once the environment is set up, environment in short, what I will tell, environment मतलब आप simple समझिए, जब भी आपको टेस्टर सॉरी डेवलपमेंट टीम से बिल्ड मिलता है, राइट, पर्टिकुलर बिल्ड आपको कहीं ना कहीं पे डिप्लॉय करना पड़ता है, राइट? सो दैट इज नथिंग बट एनवायरनमेंट सेटअप. फॉर एग्जांपल मोबाइल ऐप है आपका. ओके, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल ऐप है, तो पर्टिकुलर मोबाइल ऐप टेस्ट करने के लिए आपके पास टेस्ट एनवायरनमेंट, मतलब टेस्ट करने के लिए टेस्ट मोबाइल होना चाहिए. सॉरी, यस, सो पर्टिकुलर मोबाइल ऐप टेस्ट करने के लिए आपके पास टेस्टिंग एनवायरनमेंट मींस आपके पास एक सैंपल टेस्टिंग मोबाइल होना चाहिए विद स्पेसिफिक वर्जन्स, या आप पीसी के अंदर भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें भी आप चेक कर सकते हैं. जो भी है आपका वेबसाइट है पर्टिकुलर, तो वेबसाइट कहीं ना कहीं पे तो डिप्लॉय किया होता है, राइट? इसका स्कोप है थोड़ा आगे, तो अभी के लिए समझिए पर्टिकुलर जो वेब एप्लीकेशन है, पर्टिकुलर जो मोबाइल एप्लीकेशन है, वो कहीं ना कहीं पे इंस्टॉल होना चाहिए. इन शॉर्ट आप समझिए इंस्टॉल होना चाहिए. ओके, या डिप्लॉय होना चाहिए, सिंपल. ओके, इंस्टॉल होना चाहिए या डिप्लॉय होना चाहिए, तभी आप उस पे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट कर सकते हो. ओके, डिप्लॉय होना चाहिए. ओके, ठीक है, फाइन. ओके, जैसे ही पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय होता है, देन ओनली वी आर गोइंग फॉर टेस्ट केस एग्जीक्यूशन. हमने जो भी स्टेप्स लिखे हैं ड्यूरिंग टेस्ट केस डॉक्यूमेंट, राइट, वही सिमिलर टेस्ट केसेस हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं. एंड वंस वी डन विद दिस टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, हम उसका एक प्रॉपर समरी रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, विद द टीम शेयर करते हैं, राइट. हर एक फेज में है ना, हर एक डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू होता है. ओके, जैसे हमने डिटेल में देखा विद पीपीटी, टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट होगा, इसका भी थ्रू टेस्ट मैनेजर रिव्यू होगा. आपका टेस्ट केस डिजाइन डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर करेगा टेस्ट इंजीनियर, एंड इसका भी रिव्यू होगा थ्रू टीम लीड और टेस्ट लीड. एनवायरनमेंट सेटअप होता है, इसके लिए डिफरेंट टीम भी हो सकती है, या आपके
कोई टीम में से एक पर्टिकुलर पर्सन भी कर सकता है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। ओके, एंड टेस्ट एग्जीक्यूशन, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन ये प्योरली काम है टेस्ट इंजीनियर का, एंड वंस डन विद द टेस्ट एग्जीक्यूशन विल बी शेयरिंग अप द रिपोर्ट, राइट। And yeah, one more phase is there. During this only there is that one, during test case execution only, okay, we'll be finding the bug, right? Once we like once we got the bug, then we are making a defect report. Okay, defect report, and that particular defect report we are sending with the team. And once that particular defect is fixed, then again what we are doing, we are retesting, we are doing a regression, and we are cross checking if the bug is s- uh, fixed or not, right? So yeah, during this phase we used to get our test case execution report as well as bug report or defect report, right? And once we're done with all the test cases execution, all the bugs are fixed, then we'll be going for test closure, right? So these are all different phases during STLC. Okay, so yeah, this is what overall view about the SDLC and different document involved within this phase. Okay, yeah. Okay, guys, there will be one another question, like yeah, we have seen like on a high level what is test plan, right? Okay, a test planning phase, sorry. And during this test planning phase we are like our team, senior team or test lead is creating the test plan. So there will be a question like what all are the content, आपके टेस्ट प्लान में कंटेंट क्या क्या हो सकता है, राइट? सो हमें वो देखना है। जैसे हमने देखा ना ड्यूरिंग एसडीएलसी फेज इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखा, उसके पहले भी यूजर रिक्वायरमेंट देखा, राइट, और बीआरडी देखा, बीआरएस देखा, देन डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन देखा। लाइकवाइज दिस इज ऑल्सो वन टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंटेशन विद इन योर एसटीएलसी फेज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल फेज, राइट। एंड इसमें कंटेंट क्या क्या हो सकता है देखिए। A test plan document describes the test scope, then your test strategy, objective, schedules, deliverables, and resources required to perform testing for a software product. जो भी हमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे टेस्टिंग परफॉर्म करनी है उसके सराउंडिंग टेस्ट स्कोप रहेगा, हमें फंक्शनल करना है, नॉन फंक्शनल करना है, जीयूआई करना है। टेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी, आपको मैन्युअली जाना है, ऑटोमेशन पे जाना है, राइट, या कौन कौन से टेस्टिंग टेक्निक का यूज करना है। ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपको ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट क्या क्या चीजें टेस्ट करनी है, राइट। शेड्यूल रहेगा, फर्स्ट फेज में क्या चेक करना है, सेकंड फेज में क्या चेक करना है, जो भी आपके साइकिल्स है। ओके, डिलीवरेबल्स मींस एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर फेज आपको क्या एज अ आउटपुट चाहिए, राइट। ओके, वो भी हम यहाँ पे डिसाइड अप करते हैं। देन रिसोर्स रिक्वायर्ड, मतलब कितने मैनुअल टेस्टर चाहिए, कितने ऑटोमेशन टेस्टर चाहिए, लाइकवाइज। ओके, फॉर टेस्टिंग फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है ड्यूरिंग योर टेस्ट प्लान कंटेंट। सो इसमें बेसिकली टेम्पलेट में ओवरव्यू होता है आपके प्रोजेक्ट का, राइट, सराउंडिंग टू टेस्टिंग। स्कोप में क्या क्या है, फॉर एग्जांपल इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब हमें क्या क्या चीजें टेस्ट करनी है, आपका टेस्ट एनवायरनमेंट कैसे सेटअप होगा, सॉरी। एक्सक्लूसिव मतलब स्कोप में क्या नहीं है, फॉर एग्जांपल कई प्रोजेक्ट में होता है ना हमें सिर्फ फंक्शनल टेस्टिंग करनी पड़ती है, वहां पे ज्यादा नॉन फंक्शनल का स्कोप नहीं होता, तो वो अंडर एक्सक्लूसिव आएगा। मतलब जो चीजें नहीं करनी है ना वो भी लिस्ट करते हैं हम, ताकि क्लियरिटी रहे हमें क्या चीज पे फोकस करना है और क्या चीज पे नहीं करना है, राइट। देन आपकी टेस्ट स्ट्रैटेजी होगी, डिफेक्ट रिपोर्टिंग प्रोसीजर होगा, जैसे हमने बात की थी ना कि डिफेक्ट हमें रिपोर्ट करना है तो उसके लिए प्रोसेस होगा, आपको एक्सेल के थ्रू करना है, कोई जीरा टूल यूज करना है, या कोई अदर अनदर मेथड है, जो भी है वो पूरा डिफाइंड रहेगा। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन रहेगी, आपके मैनुअल इंजीनियर की क्या रोल्स है, ऑटोमेशन इंजीनियर के क्या रोल्स है, सारा कुछ डिफाइंड होगा। देन टेस्ट शेड्यूल होगा, जैसे फर्स्ट मंथ में क्या हमें पुट अप करना है, क्या टेस्ट करना है, नेक्स्ट मंथ में क्या करना है। लाइकवाइज आपका जो भी प्रोजेक्ट रहेगा ना उसके सराउंडिंग प्लानिंग रहेगा। देन प्राइसिंग, ओके, दिस इज फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, जो भी पर्टिकुलर रिसोर्सेस है, जो भी टेस्टर्स है, उनका प्रोजेक्ट के लिए क्या कॉस्टिंग रहेगा, राइट। सो वो भी कैलकुलेट किया जाता है। देन एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया, कोई भी फेज हम अगर स्टार्ट करते तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, बेस्ड ऑन दैट हमें आउटपुट में कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वही बेसिकली कंटेंट्स इनटू द एंट्री एंड
एग्जिट क्राइटेरिया। देन सस्पेंशन एंड रिजम्पशन, ये भी है थोड़ा, हम देखते हैं बाद में, ठीक है। देन टूल्स, हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स कौन से यूज करने वाले हैं, राइट, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर टेस्ट प्लान। देन रिस्क एंड मिटिगेशन, रिस्क मीन्स फॉर एग्जांपल आपके टेस्टिंग प्रोजेक्ट में 4 नंबर ऑफ टेस्टर्स काम कर रहे हैं, बाय चांस कोई लीव पे चला जाता है, कोई मेडिकल रीजन से लीव पे रहता है, राइट। सो इन दैट सिचुएशन जो भी हमने टाइमलाइन डिफाइन की थी, पर्टिकुलर टाइमलाइन मीटअप नहीं हो पाती, राइट। सो इन दैट सिचुएशन अगर ये टाइप से सिचुएशन आता है तो हमें कैसे टैकल करना है, उसका भी प्लानिंग होता है थोड़ा, ठीक है। एंड अप्रूवल्स, कौन से पॉइंट पे, कौन से डॉक्यूमेंट पे किसका अप्रूवल चाहिए, वो भी सारा कुछ लिस्टेड होता है ड्यूरिंग योर टेस्ट प्लान कंटेंट डॉक्यूमेंट, ओके। या सो यस, दिस इज ऑन दी टेस्ट प्लान कंटेंट डॉक्यूमेंट। क्लियर है guys यहाँ पे? Yes, sir.